Hello everyone, welcome back to my channel, and today I am going to explain figures of speech. In this video I'll explain 5 figures of speech and the rest I will be explaining in the upcoming videos. So first of all, I want to explain why do the writers, poets, writers, they use figures of speech just to clarify the ideas what they want to tell the readers. Okay, therefore the figures of speech are used, and also to decorate the ideas. It decorates the ideas more specifically, and the readers also, while reading the matter, they enjoy it, they like it, the detailed description, and therefore for all these purposes figures of speech are used. So first we will see simile. Means it is also called मराठी हिंदी उपमा जिसको देते हैं. So the definition: simile derives from the Latin word simile, means similar or like. Okay, it's a direct comparison using as and like. This is the definition of simile. I have given some examples. See this one: as hot or bright as the sun. Direct comparison. Okay. Then next example: her eyes are sparkling like diamonds. Like. Again, direct comparison. Then these are from the poems. This city doth like a garment. Means this city, direct comparison is as if it is wearing do. Dot means do. Do is do wearing a garment. Direct comparison. City wearing a garment of houses, roads, all these things. See William Wordsworth's poem. Then here, white as a feather and white as a cloud. Indian weaver's poem, white as a feather and white as a cloud. Direct comparison. So see, these are the 4 examples of figure of speech simile. The next is metaphor. Metaphor म्हणजे रूपक. Okay. Then definition: a comparison between two unlike things without using like, as, or than. See, this word is very important. See this, without. Okay, without using means यहाँ पे इनडायरेक्ट कंपैरिजन होता है. सिमिली में डायरेक्ट था, यहाँ पे it is indirect comparison. And the examples are: the snow was a blanket of white on the ground. ये ग्राउंड है, ट्रीज है, पर्वत है, ये ग्राउंड है, इसको पूरा कवर ने स्नो ने कवर कर दिया, एज इफ इट वॉज अ ब्लैंकेट, स्नो ब्लैंकेट. इनडायरेक्ट कंपैरिजन. यहाँ पे एज लाइक कुछ नहीं है, और दैन भी नहीं है. कीप दिस इन माइंड. लाइक, एज, दैन, ये तीनों यहाँ पे नहीं यूज होते. नो. एंड सेकेंड एग्जाम्पल: द क्लाउड्स आर फ्लफी कॉटन कैंडी. कॉटन कैंडी मीन्स बुढ़ी का बाल, सबको पता है. सो द क्लाउड्स आर एज इफ दे आर लुकिंग लाइक कॉटन कैंडी, फ्लफी कॉटन कैंडी. आर यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये किया है. द क्लाउड्स आर फ्लफी कॉटन कैंडी. इनडायरेक्ट कंपेरिजन. थर्ड: माई होम टाउन लाइज कामली अमिड्स द ट्रीज, अमंग्स द ट्रीज. मीन्स यहाँ पे ट्रीज यानी पूरा नेचर, यानी माई होम टाउन लाइज इन बिटवीन द valleys, hills, countryside, means in nature. Indirect comparison. Then fourth example: the country wears perfect rows of shining teeth. means यहाँ पे indirect comparison. shining teeth, rows of shining teeth यानी बहुत सारी buildings. Okay, so the country wears perfect rows of shining teeth. buildings की जो rows है, लाइन में सब बिल्डिंग्स है, घर है, तो इनको कंपेयर किया है इनडायरेक्टली शाइनिंग टीथ. सो दीज आर दी एग्जाम्पल्स ऑफ मेटाफोर.
द थर्ड फिगर ऑफ स्पीच इज पर्सॉनिफिकेशन, मीन्स मानवीकरण जिसको बोलते हैं, आणि मनुष्यत्वाचा आरोप इन मराठी. ओके, मीन्स वॉट? Personification is when an object which is not alive is given human qualities. Okay, the first example, see, we ran as if to meet the moon that slowly dawned behind the trees. Meeting means meeting the moon. It as if it is given a human quality. Therefore it is personification. Okay? Then the leaves danced way through the lawn. Second example, the leaves are dancing, given dancing as a human quality given to leaves. Okay. Then here, sunlight I see dying fast, means the sunlight was fading, actually becoming low and low. It was about to be evening. Means dying, means it was, the sun is setting, so dying quality, human quality. Then last example, never mind silent fields. See, the fields are given the human quality of silence, silent fields. So these two are from poems, and these are just for phrases. Okay, from text we can say. So I am giving you examples from both text and poems. Okay. Then the next one comes, the fourth figure of speech is alliteration, means anupras alankar, alliteration. Okay, now what is alliteration? We'll see the definition of alliteration. Alliteration is repetition of the first letter or sound of each word in a sentence, phrase or poem. So the first example, monkey make major messes. The letter is also repeated and the sound of M is repeated. Second example, voracious volcanoes vibrated the valley very violently. Volcano is Jwalamukhi. Okay, so see, the letter is also repeated and the sound of V is also repeated. Then third example, darkness deepens, means here the consonant D is repeated and the letter is also repeated. The consonant D, sound of D is also repeated. Weavers weaving at break of day. Letter is repeated and the sound is also repeated. Weavers weaving at break of day. So these two examples are from the text. Okay, and these are from poems. These are general examples, so you can understand. Then the fifth figure of speech is imagery. It is used to create mental pictures in the minds of the readers. A definition of imagery, मराठी में हिंदी में प्रतिमा बोलते हैं. Then imagery is the author's use of language that appeals to the five senses in order to help the reader imagine exactly what is being described. ठीक है, this helps to ये ignite the five senses. तो अपने five senses कौन से हैं? Smell, sight, touch, taste, hearing. These are the five senses. अब ये जो दो है, beyond these five senses, two more are attached. The two are, first is the feelings and secondly kinesthetic, means motion or movement. Okay, main ये five senses है, but these two are also considered as examples of imagery. These are imageries. Okay? Beyond these five senses, two more. Now see, first उसको क्या बोलेंगे? Smell, olfactory imagery. I means imagery, I have written in short. Sight, visual imagery. Touch, tactile imagery. Taste, gustatory imagery. Feelings means organic imagery. Hearing means auditory imagery. And kinesthetic means
मोशन मूवमेंट म्हणजे गती सौंदर्य किंवा गती संवेदी. Now we'll see the examples. The concert was so loud that her ears rang for days afterward. वो क्या दर्शाता है? साउंड. कॉन्सर्ट का जो साउंड था, म्यूजिक कॉन्सर्ट होंगे जो भी कॉन्सर्ट, तो उसका साउंड इतना ज़ोरदार था कि कई दिनों उसके कान में वो साउंड फॉलोड इन द ईयर्स, रैंग, बजते रहता था. लाउड echo sound we can say, it echoes in the mind or in the brains. That is one example of sound. ऐसे कई examples है अलग अलग. Okay. Second example, her perfume smelled like a garden of roses. Smell, simple, her perfume was very nice, fragrance was, वो simple हो गया. लेकिन ये इसको सुंदर कैसे, imagery कैसे बनाना? Her perfume smelled like a garden of roses. See the imagery used. Means the reader also exactly understands in detail the fragrance, the smell. ये अपने बराबर अपना हम लोग वैसा ही पिक्चर अपने मन में लाते हैं. And we think that in the same way as soon as we read the images in the poems or in the text phrases, कहीं भी ये सुनने के बाद तुरंत वो पिक्चर अपने माइंड में आ जाता है, आंखों के सामने आ जाता है. See, okay, it is very decoratively written. Then, where have you drawn of all the foul liquid and meat? ये पोएम की लाइन से. टेस्ट अ फाउल मीट यानी सड़ा हुआ मटन या जो भी मीट, नॉन वेजिटेरियन मीट. अब फाउल बोला है, सड़ा हुआ, तो तुरंत हमको वो स्मेल भी कुछ तो भी याद आ जाएगा, वो पिक्चर भी हमारे सामने आ जाएगा, मन में बैठ जाएगा. फाउल लिक्विड एंड मीट. ठीक है, वो टेस्ट दर्शाता है. एकदम अपने टेस्ट की जो सेंस है वो इग्नाइट हो जाएंगी, एकदम से टिकल हो जाएंगी. देन द बर्ड्स फ्लैप देयर विंग्स इन एक्साइटमेंट एज अ फूड सो क्लोज. अब यहाँ पे वो बर्ड्स फ्लैप देयर विंग्स, मोशन है यहाँ पे, विंग्स हिल रहे, मोशन है, मूवमेंट है. क्यों? वो बर्ड्स को फूड दिखा तो दे वर सो एक्साइटेड कि खाने को कुछ दिखा तो दे वर सो हैप्पी एंड दे स्टार्टेड फ्लैपिंग देयर विंग्स. वहाँ मोशन है, मूवमेंट हो गई, इसलिए किनेस्थेटिक इमेजरी है, यहाँ पे मोशन दर्शा रहा है. देन फोर्थ एग्जाम्पल, इट इज आई थिंक 1 2 3 4 फिफ्थ एग्जाम्पल. ओके, वाई डू यू वीव अ गारमेंट सो ब्राइट लाइक प्लूम्स ऑफ पीकॉक पर्पल एंड ग्रीन. सी द वीवर्स वे वीविंग गारमेंट एंड it is colors having peacock, just like a peacock, purple and green. मैंने पोएम पढ़ा के बताया था, लव एंड मैरिज, प्रॉस्पेरिटी, ऑल द कलर्स इंडिकेट दैट. टू मेक द डिस्क्रिप्शन मोर ब्यूटिफुल, द पोएटेस हैज़ यूज्ड द कलर्स ग्रीन, पर्पल, पीकॉक. मीन्स तुरंत हमारे सामने पीकॉक सामने आता है, द कलर्स वी कैन सी एंड इमीडिएटली दे आर कंपेयर टू गार्डन in the garment. In the garment, these colors are used, so it will be so beautiful. So love, okay, it is for the garment is be for a marriage, so love is also there, marriage is there, okay, and these colors indicate love, prosperity, okay, all these things. Immediately the image forms because of the beautiful description. The lines have been decorated by images, therefore immediately हमारे सामने, आंखों के सामने, अपने मन में वो इमेज आ जाती है. Okay. Then last example, sixth, in his first splendor, valley, rock or hill, sight. यहाँ पे upon Westminster Bridge, विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम. तो इसमें साइट भी दिखती है कि उन्होंने साइट यानी उनको दिखा, उन्होंने इंग्लैंड को वेस्टमिंस्टर ब्रिज से जब देखा, सो व्हाट ही थॉट. और फीलिंग्स क्यों आते हैं? बिकॉज इन द अर्ली मॉर्निंग, ओके, यहाँ पे वैली, रॉक और हिल एज इफ दे आर, ये हावी हो रहे, दे आर गेटिंग एक्टिवेटेड इन द माइंड ऑफ द पोएट बिफोर, बिकॉज द सिटी इज अस्लीप इन द अर्ली मॉर्निंग आवर्स. तो वहाँ पे उनको लगता है कि दिस वैली, रॉक और हिल, दे आर मोर गेटिंग एक्टिवेटेड इन द माइंड, क्योंकि सवेरे का दृश्य बहुत अलग होता है when he sees from the bridge.
और जब सब लोग उठ जाएंगे, अगेन इट विल बी हसल बसल ऑफ ट्रेन्स, पीपल, इट विल बी क्राउडेड. बट बिफोर दैट द नेचर इज एक्टिव, सो ऑल दिस थिंग्स कम इन हिज माइंड. सो यहाँ पे फीलिंग्स भी दर्शाती है एंड द साइट ऑल्सो, वॉट ही सीज. ठीक है. So these are the different examples of imagery. So there are various examples. Just to I have just to express, I have chosen. I want to tell you more in detail about these two imageries. One is organic imagery and the other is kinesthetic imagery. Okay. See, we have already seen one example about this. See, one is organic, okay, and this one is kinesthetic. Yeah, here it was excitement and the motion of wings, flapping of wings was there. But besides that, there are many other feelings and emotions, and here also. So I'll just explain in detail. See, this is organic imagery. Emotions or feelings, we can say fatigue, thakan, hunger, thirst, internal sensations and internal emotions like fear, love, despair. Despair is nirasha, या से dullness, sadness, okay, all hopelessness, we can say. All these different type of emotions जब तुमको पोएट्री में या फ्रेज में या कहीं देखेंगे तो यू कैन राइट एज ऑर्गेनिक इमेज. इट विल बी एग्जाम्पल्स ऑफ ऑर्गेनिक इमेजरी. ठीक है. दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ feelings. Then those feelings come under this category, organic imagery. These are the different types of feelings. So then it becomes example of organic imagery. Then comes kinesthetic imagery. So in kinesthetic imagery we have seen here flapping of wings, motion था, beating of wings, the birds flap the wings, beat also we can say, beat the wings. So here also different types of motions रहेंगे. कभी कभी मूवमेंट ऑफ स्पीडिंग व्हीकल्स, उसमें भी किनेस्थेटिक इमेजरी बोल सकते हैं. एग्जांपल, मूवमेंट ऑफ स्पीडिंग, बहुत ज़ोर से व्हीकल्स का मोशन होता है. या स्लो सॉन्टरिंग. स्लो सॉन्टरिंग यानी लेजीली चलना, टू वॉक लेजीली, आइडली, विदाउट इंटेंशन, फ्रीली, स्लोली. ओके. और सडन जोल्ट व्हेन स्टॉपिंग, या तो एकदम से रुक जाना, जोल्ट, एकदम सडनली, दैट इज ऑल्सो किनेस्थेटिक इमेजरी. देन मूवमेंट ऑफ पोएम्स, स्पीकर, narrator, movement of poems, the speaker, the narrator, or objects around them. All these come under kinesthetic imagery. So I have discussed in this video 5 types of figures of speech, and the rest of the figures of speech I will take accordingly in the next videos. So thank you for watching.